Code is the founder and CEO of Think AI, a thriving machine learning community, the owner of C.S.E.Pathshala by Nirmal Gaur, and a Kaggle expert. With a deep passion for AI and education, he currently serves as an assistant professor in the Department of CSE at Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha, Madhya Pradesh. He has also been a former tutor at An Academy. With such an impressive background, Mr. Nirmal Gaur will guide us through the latest AI advancements and their impact across various industries. Get ready to gain valuable insights and explore the transformative potential of AI. Without further ado, let's welcome Mr. Nirmal Gaur to take the session forward. Thanks a lot, Vanshika, Anshika. I can see many of the girls here, and I'm really glad that you communicated to me and asked to have a session for the girls at your institute related to emerging trends in AI. And as we now see that AI is something which is a very hot topic, especially LLMs, large language models, and we all know about chat gpt, and there are many other AI tools you are using, everyone is using. Also, different companies like Google, Meta, they have released their LLMs. Also, we are having a competitor like DeepSeek, uh, LLM, which has been recently launched by China, and that has proved to be a better LLM than the Chat GPT. So right now we are in an AI race, and I request every student, everyone here, that the future belongs to automation. You guys are being part of any of the field, but I know you have to do coding. CSE students, they do code in various languages like C, C++, Python, Java, etc. But the point here is, you know that AI tools can make the code also. If you give a prompt, they can give you the entire code, entire content, articles. There are many things which can be now created by AI tools. So, actually, with artificial intelligence, we want to remove the humans from the loop. That's what AI means. Artificial intelligence. Intelligence, as we say, if we give a problem statement, so that problem statement, how a person can solve in a quick time. Okay, we say that this person is intelligent. How we can say that this is intelligent? In a quick time, how that problem can be solved effectively. That's why we call as an intelligent. Artificial, the point is we are making machine intelligent. And how we are making machine intelligent? We are making machine intelligent by feeding data into it. Okay, that's what we do. Okay, we feed the data into the machines, and we apply algorithms, and machine do learn, they do train over the data with the help of algorithms, and they can perform the prediction, they can perform the classification, they can perform so many things. Okay, that is, you are calling right now as a generative AI. Okay, so it's been transforming society and industry in many ways. There has been always a question that AI is going to take a job. AI is going to take a job. Why? Because those people who do repetitive work, same work, then AI obviously going to take over you. If you do some task which is repetitive in nature, AI is going to take your job. You have to be creative, you have to be innovative, you have to be a critical thinker, you have to be reasonable, you should be good in maths. All these things are required. It's not only that, okay, you guys are some engineering and you're studying some subjects and to pass the exam. No, 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 this is not the criteria. This is absolutely not the criteria. Now you have to research, you have to explore more,
and you have to identify what the problems are and how to solve the problems. So this is what my title is, which you are seeing in the slide number 1, transformative impact. There are so many impact of AI, and still we are using only 1 or 2% potential of AI. If you think that AI is chat gpt, no, it's only 1 or 2% of AI. AI is a big thing. Okay, still we are in a phase where the developments are going on, and these people are working to achieve super AI. Super AI means where we are going to overcome the intelligence of humans. Okay, so let's proceed more. And in an introduction part, as I already told, that we are providing ability to machine to perform tasks which humans can do by giving them data, algorithms, so that they can learn, they can solve the problems, they can do decision making, they can understand your language, Hindi, English, whatever. Okay, they are transforming industries from healthcare to finance to entertainment to manufacturing. A lot of things are going on. In the recent breakthroughs, if you say generative AI, LLMs, chatbots, Chat GPT, Gemini from the Google, Llama from the Meta, DeepSeek from the China model, Midjourney, there are so many models are available in the market, which can generate text, which can generate images, which can generate videos, which can generate audio. There are many things can be done. Okay, the focus of this presentation is I'm going to talk about the emerging trends and their impacts, and we are going to see them one by one. The first point here I have taken is agentic AI. See, uh, I have scrolled through your institute website. I haven't seen that there is an AI branch. Is it, Anshika? Only AI branch. There is a specialization I have seen. Yes, Yes, Vanshika, sir. Anshika, there is no separate AI branch. No? There is a specialization. That's what I have seen. Yes, sir. Okay, but here at my place, and there are other places also which I do visit and take the sessions. They do have a separate branches for machine learning and artificial intelligence. However, if you are focusing upon the specialization part, the point is how many projects and what algorithm, maths, techniques you apply, and how much you do research. Okay, that should be the outcome. Well, let me discuss about agentic AI first. What is this agentic AI? Well, the trend goes from in this way. Now I'm sharing another screen. Let me share the entire screen and explain you here. Okay. Now let me explain you. I hope you can see my white sheet. Okay. Now here it is. So the important thing is the first data. Okay, data. And data is a, you say it's a new currency, and any organization who is having a lot of data is the richest one. Data is behaving like a fuel. Okay, so in this field of data science and machine learning, artificial intelligence, data plays major role, because as I already explained that we put data into algorithm, and there is a training performed, and after training you got a model that is called as a machine learning model or a mathematical model, statistical model, whatever you want to say you can. Then we can use this model to perform prediction, classification,
Generation, text generation, image generation, audio generation, video generation depends what kind of algorithms you have used, what kind of your training has been performed, and accordingly you are going to get the results. Okay, so the things started with this data science where you should be knowing about linear algebra, statistics, probability, information theory, calculus. These are the major topics of maths you should know. If you want to get into the field of AI, if you want to have a success in this field of AI, maths is something which is very much important. If you know the maths, then only you can do this data science and machine learning and AI part. Else you can't do. Okay, coding is fine. Python is a programming language which we do prefer. There are other languages like R, okay, for the data science. However, Python is rich in libraries, so we prefer Python for the implementation, for making the projects. You can use R language also for statistical analysis. That's okay. Fine. So here in this particular data science and machine learning, we do perform data pre-processing. We are available with the raw data. We collect the data from various sources. We are having raw data. We process the data. We make the insights from the data by performing visualization. I hope you know about the tools like Tableau, Power BI. There are various tools to perform the visualizations. We can make the visualizations using Python also. Okay, that's what we call as an work of data analyst. Okay, right now many of the organizations they do hire the students for data analyst roles where they are expert in the tools like Power BI, Tableau, etc. They can draw the insights from the data. Okay, fine. So right now this data engineering field is being very much in advantage. It's been required. Many of the organizations they want the people who can work over the data, who can prepare the pipelines. Okay, and then if you are having an plus role like model development, model deployment, okay, so that will be much more better skills. Fine. So in machine learning we do perform like prediction, classification. These are the basic tasks. Then we are having deep learning, which is a subset of machine learning. So if I consider that this is artificial intelligence, okay, so machine learning is a subset of AI, and deep learning is a subset of machine learning, and generative AI is the subset of deep learning. Okay, so right now we are using the tools like chat gpt and all as generative AI tools. Okay, fine. Machine learning, in this particular case, we can work on limited data, but when the data increases, then we perform deep learning. In deep learning, we use neural network. Okay, like our brain, na, our brain is having neurons, our brain is having biological neurons. Okay, so similarly neural network has been there where we can have artificial neuron, and we can train a model based upon this artificial neuron. Okay, then generative AI is also based upon the deep learning. Such kind of architectures where we are having the layers, neurons present in the layers, but depends upon the organization how we are going to organize those layers. Okay, so if you talk about the models, if you talk about the tools like Chat GPT, they are also based upon deep learning models or the architectures. Okay, where we are having different components like encoder, decoder, and in these components we are having the organization of layers where we keep neurons. Neurons are the computational units. In our brain we do have biological neurons, and whatever you sense, that information is sent to the neuron, and it process that information and proceed it, forward it to the next neuron. Same thing here happens here also. Okay, we give the data as an input.
Okay, it get processed at the neuron, and the mass which happens here is wx plus b. This is the mass which happens at the neuron, where x is your input, w is the weight, b is the bias, y is the output. Okay, and here we do have activation functions also, which are non-linear in nature, and they do capture the relationship between the dependent and independent variables. Okay, so this is how the thing goes in your AI, ML, deep learning, generative AI. There are a lot of more things which can be discussed, because if I would say in AI, there are two major fields. One is NLP, that is natural language processing. Another is computer vision, where we deal with the images. So NLP deals with the text. Computer vision deals with the images. Okay, so we can explore NLP till LLM and more, which is going to come. And in computer vision, we can go ahead and we can talk about object detection, object segmentation, classification. Rest of the things are going to come. Okay, fine. So these are the two oceans of artificial intelligence. We can have other things also, like sound, audio processing, that can also be included. But majorly, the research and the work has been going on in these two areas. Okay, fine. Now, in this particular slide, I have mentioned agentic AI. What AI agents do, that is again a hot topic. AI agents can continuously plan, execute tasks, and make decision without human intervention. Agents are designed in such a way that they can automatically perform a task without your requirement. For example, if you are looking for some job role, you want to apply for some job role. Okay, so AI agents will automatically search for all the job openings which are suitable for your profile. They can also automatically apply, they can search, they can apply on your behalf whatever be the suitable job roles available. That's what they can do. And it's a specific, for example, I'm talking about the job roles. You can have a financial AI agent, you can have a healthcare AI agent, you can have any of the AI agents, so they can automate the task. Okay, and your requirement is not there. Fine. So automation of the workflow, that's what we are saying. Customer support. Okay, we can make a chatbots that can handle customer queries. You do not have to speak and answer every time that okay, this is the query came in, I need to reply. No, no, not required. Let's make an agent that will reply. Okay, so in healthcare, in finance, customer support, AI agents are going to be deployed. They will reply. Okay, so there is no humans required here. Okay, so like Auto GPT, Google DeepMind, AlphaCode, self-driving AI, these are some of the real-world examples, some of the projects related to AI agents. Okay, fine. Then the next is like okay, this is the diagram of AI agents. Here is the agent. We are going to provide the ability, goal, preferences, prior knowledge to the agent. Okay, and the agent will work according to the environment. Okay, according to the observations, according to the past experience, agent will take an action. Okay, so agent will take an action depending upon the ability, preferences, and the prior knowledge. It will take an action. Okay, fine. So we can build agents for various tasks. That's what going on. Then the next is multimodal AI. Multimodal means we are having an AI system which can process and understand different type of data. Like if you are using paid version of chat GPT, okay, I can say that that will behave as multimodal.
Okay, that will behave as a multimodal. You can give text as an input also, you can give image as an input also, you can give text as an input and you can ask kindly make an image for me. So if you give input as an text and it will create an image. Okay, if you give text as an input and you can ask kindly create a video for me. This is what going to happen in the next, this is what going to happen soon. Okay, fine. So right now there are tools available which are making short videos like for few seconds or something. But later on, after you will see after 5-10 years, long length videos can also be created. Just give a prompt and it will create the entire video. This is going to happen. Okay, fine. So multimodal can process and understand different type of data. It can be a text, it can be an image, it can be audio, video. Like GPT-4o Gemini AI can understand and generate content across multiple modalities. Okay, so again the point is, in healthcare, content creation, retail, e-commerce, it's going to help a lot. However, the challenges are to train such models. It requires high computational cost. There is bias in the training data. Okay, bias, error, or I would say alignment towards some specific data. So we want a data. It should not be biased. It should not be aligned to any of the community or caste or any of a person. No, we want unbiased data. But there is a biasing. That is also one of the challenge. Security risk is also there. Okay, because now you are saying that create something new, so it can create deep fake also. Okay, it can create a misinformation also. All right, so creating an image which is not a reality but it looks like a real image, that is a biggest challenge. How you are going to filter that this image is a real image, this image is a fake image? There are many challenges which AI has been bringing. Okay, so we have to consider them. However, multimodal AI can analyze, can interpret, can create any of the data type. Okay, got it. So this is what you can see in unimodal and multimodal. In unimodal, you can give text or image. However, in multimodal, you can give text, image, audio, video, anything, any to any. Okay, it works as any to any. Fine. And it can generate any to any, image to image, video to video, video, text to image to text. There are many models which can transform any format of data. It's happening. Okay, got it. Fine. Then the next thing is like the generative AI. We are already using Gen AI tools. So what happened is, when this data science is going on. Okay, if I talk about few years back, the major concern for the students are related to computer science and engineering. Sir, we want to become an developer. Okay, so we do take admission in CSE, in IT. We do take the admission. We'll become a developer, and we are going to get a good job, high package. That's what the dream is for the students. Okay. Meanwhile, there is one more branch which was growing, that was data science. Okay. And in data science, the people used to do like MSc in statistics, BSc in statistics, okay, maths, and that's what these people were doing. Okay. But in the recent years, we have seen with the advent of this chat GPT tools and with the advent of other tools which can perform visuals and analytics part, it became so much important. It became so much important. Okay, because the reason is data became so much important. Fine, data is now, I will say, everything. If you say how chat gpt is creating something, because of data only. It has been trained on a huge amount of data.
In fact, these guys have captured OpenAI. They have captured the entire data from the internet. Okay, and they have feed into the GPT model for training. And after training, they have performed the fine tuning in order to make the model reply in a better way. And then they have deployed the model, and now you are using that only. Okay, so there's a lot of engineering happens here. I gave you a simplified way. Okay, so this was one which we do, but right now, as I also told, that AI branches, ML branches, they have separately opened in the institutes where students do learn about these technologies. Okay, got it. So the things started with this data science. Then in machine learning, we were solving problems related to prediction and classification. Okay, very basic problems we were solving. Later on, when the data grow, then machine learning failed, deep learning came. If the data is more, then deep learning came. So then we started using deep learning algorithms like neural network. Okay. Then what happened is we asked AI that, okay, Mister, you have learned. We are available with a lot of data. You can perform the basic task, but now we expect from you. Can you generate the data also? That is the question we are asking to you. You can perform prediction, you can perform classification, the basic tasks you can do. But now the question is, we are available with a lot of data. Can you create a new data? Okay. So then comes generative AI. Generative AI. That means something which is generated by artificial intelligence. So Chat GPT is a Gen AI model because it generates text. And the text which is generated by Chat GPT is artificial. Okay, it is artificial. Something which you do as a human, we that is real. Okay, and what is being done by the machine, which what is done by these tools, it is artificial in nature. So whatever be the data generated by these Gen AI models or the Chat GPT is synthetic in nature. We call that as synthetic. That is artificial in nature. Okay, got it. So we have built some algorithms, we have built some techniques in which we give data to the model and model generate similar kind of data. So if we give text to the model, model will create text. And there is a obviously proper steps and engineering, a hard engineering has been applied. Development of model or architecture is also been important here. Okay, so right now Gen AI is playing a major role. In fact, Indian government is also been looking forward that how and what we can do. So can we make our own LLMs, large language models? Because let me tell you very frankly, we are delayed. We are delayed. We are very late in this race. We are very much late in this race. Obviously, US has been on the upper hand. However, China, never underestimate this. Never underestimate. Okay, they have done a lot. In fact, they have overcome US also. If I do talk you from 2014 till 2025, let's say 2025. Okay, the China has filed 35,000 plus patents related to the AI. US has filed only like 7 to 8,000. You can see China is 4 times, 5 times more than the US. India is just like 1500 to 2000. So there is no comparison, not at all. कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि हम इनसे कहीं किसी लेवल पर बात करें. Okay, and the only point here is these people believe in research.
Okay, these people believe in research. These people focus upon maths. These people focus upon reasoning. ओके, तो एबिलिटी यदि आपको, इफ यू वांट टू इंक्रीज द एबिलिटी टू डू समथिंग न्यू, आपको यहां पर आना पड़ेगा। और हम जानते भी वेरी वेल नो कि इंडियंस पीछे नहीं है मैथ्स में। हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत है, वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, वी आर हैविंग सो ग्रेट मैथमेटिशियंस विद अस, जिनका बहुत अच्छा काम है। बट द पॉइंट इज, अब आपका जो स्टडी हो रहा है वो ओनली, जैसे कह रहे हैं ना कि यहाँ पर आई डिड टोल्ड कि आप ये सीएसी और आईटी इंजीनियर बन गए हैं, डेवलपर बन गए हैं, आपका गोल यही रहेगा कि कैन वी क्रैक ह्यूज पैकेज कंपनी, हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये जॉब प्रोड्यूस करने वाली बात है, ना कि ग्रैब करने वाली बात है। ओके, तो मेरा मोटिव यही रहता है, वेर एवर आई गो, वेर एवर आई स्पीक, कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए फॉर रिसर्च पर्पस। आप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करें। ओके, वेदर यू आर बीन अ सीएससी पर्सन ऑल्सो, आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें। ओके, और उससे रेलेवेंट कुछ आर्टिकल्स पढ़ें, उस पर वॉट एवर द वर्क हैपन सो फार ये पढ़ें आप, एंड ट्राई टू गेट सम सोल्यूशंस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे ना कैसे करके लॉजिकल और रीजनिंग एबिलिटी बढ़ाइए आप। आई नो कि आप शायद कैंपस के लिए भी इफ़ यू डू प्रिपेयर, तो आप कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप कोडिंग की प्रैक्टिस करते हो। गीक्स फॉर गीक्स है, एंड हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, ऐसा होता है आपका, आपको पता होगा। ठीक है, एंड द थिंग इज कि आपको ये एबिलिटी तो बढ़ानी ही पड़ेगी, ये मैथ्स और रीजनिंग वाली। ओके, एंड रिसर्च पर्सपेक्टिव आपको सोचना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है आप। ठीक है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, रह गए हैं एक्चुअली, रह क्या जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो जनरेटिव एआई का हियर सिंपल बात यहाँ लिखी गई है इन अ फॉर्म ऑफ दिस डेफिनेशन, दैट इट कैन क्रिएट अ न्यू कंटेंट, एंड दैट न्यू कंटेंट कैन बी टेक्स्ट, इमेज, कुछ भी, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। एंड जेन एआई पर ही हमारी गवर्नमेंट अब काम करने के लिए बोल रही है, दैट वी नीड टू वर्क ऑन जेन एआई ओनली। Okay, like we can use this thing in virtual world gaming, and many other examples which you can see here. Okay, concerns is related to deepfake misuse and the copyright, ये कुछ concerns हैं यहाँ पर। Okay, fine, here you can see there are many types of generative AI models, like we can have a transformer based model जो कि GPT है, we can have JAN model, generative adversarial network, ये सब architectures हैं। These architectures can be used to generate content. Okay, fine. And there are so many applications related to Gen AI, like art, music, content creation, fashion, financial forecasting, customer behavior. So in सब पे projects बनते हैं। Okay, and you please try to work under some professor guidance or any expert, तो आप इसमें काफ़ी कुछ और सीख सकते हो, you can learn more. Okay, got it. देन रिस्पॉन्सिबल एआई की बात होने लग गई फिर, कि आपने एआई से यू कैन बिल्ड सो मेनी कंटेंट, लेकिन वट एवर यू डू ना, जस्ट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ठीक है, सो वी हैव टू इंश्योर कि जो भी एआई से डेवलप करा जाएगा वो इथिकल होगा, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी फेयर। कोई भी ऐसी चीज आप एआई से नहीं बनाओगे विच कैन ब्रिंग बायस, डिस्क्रिमिनेशन, और वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन को आप प्रमोट नहीं करोगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल एआई, सो वट एवर बी द कंपनीज हु आर नाउ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अपनी पॉलिसी लेकर आए हैं। पॉलिसी उन वो ड्राफ्ट करते हैं कि वट एवर वी आर मेकिंग, वी इंश्योर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बायस, डिस्क्रिमिनेशन, मिस इन्फॉर्मेशन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ओके, तो बायस फेयरनेस में एआई शुड बी ट्रेन्ड ऑन अ डेटा टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, इस बात का ध्यान रखें। वट एवर बी द डेटा द मॉडल इज ट्रेन, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। एआई डिसीजन शुड बी इंटरप्रिटेबल, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि हाउ द एआई मॉडल केम अप टू अ सर्टेन आंसर, ये बताइए वो कहाँ से लेकर आया। देन रेगुलेशन एंड द कंपायर, गवर्नमेंट भी एआई को लेकर, कई गवर्नमेंट्स, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट हो, इंडिया में तो अभी मुझे बातें हो रही हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन पहले ये आप कुछ काम तो करके बताओ, तो फिर हम जाके कुछ पॉलिसी बनाएंगे। आप
खुद का कुछ एमएल ये एमएल बेस्ड या आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल कुछ बनाइए, तो फिर हम कुछ पॉलिसी लेकर आएंगे। ठीक है, तो बातें हो रही हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। सो यूरोपियन यूनियन का अपना एक एक्ट है एआई को लेकर, एआई सेफ्टी को लेकर। आईबीएम का भी इथिक्स उन्होंने बना रखे हैं, फेयरनेस एंड एक्सप्लेनेबिलिटी। गूगल एआई के भी प्रिंसिपल्स हैं। ओके, गाइडलाइंस फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई यूज उन्होंने कर रखा है कि भाई आप इसका यूज फेयर करेंगे। ओके, सो रिस्पॉन्सिबल एआई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रैटर्जी, प्रैक्टिकल अश्योरेंस, ह्यूमन ऑगमेंटेशन, बायस इवैल्यूएशन, ये सब करके देना पड़ेगा कि आप जो मॉडल रिलीज कर रहे हो वो कितना फेयर है। ओके, आप ये हमें बताइए, रिस्क वाली कोई बात तो नहीं है उससे, या आप कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं, प्रिवेसी का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है आपने, क्योंकि डेटा प्रिवेसी सिक्योरिटी की बात होती है। ओके, तो आप बताइए, क्लियर करिए कि कहाँ से क्या आप कर रहे हो, और इससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फेयर आने चाहिए। ओके फाइन, अब जैसे आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, चाइना ने अभी नया मॉडल जो डीप सीक रिलीज करा, मैंने मेंशन भी करा है। इफ यू टॉक अबाउट डीप सीक, ठीक है, ये जो मॉडल रिलीज करा, यदि आप इससे चाइना के बारे में यदि कुछ पूछते हो, ठीक है, तो वो बताने से मना कर देता है। वो बताने से मना कर देता है, बोलता है कि ये अभी आउट ऑफ स्कोप है, आप कुछ दूसरी बात करो। ठीक है, तो उन्होंने अपने मॉडल को ट्रेन कर रखा है, उन्होंने अपने मॉडल को कुछ इस तरीके से, फायरवॉल जो भी उनका सिस्टम है, उन्होंने बोल रखा है कि भाई अपने बारे में नहीं बताओगे आप। ठीक है, लेकिन कुछ और पूछो, किसी और के बारे में पूछो तो बताओ। वैसे भी हम जानते हैं कि दिस कंट्री इज नॉट बीन ओपन टू मच। ओके फाइन, तो ठीक है, उनकी पॉलिसी है, वो जैसे वर्क करते हैं। तो उनका जो मॉडल आया वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि आई डो नॉट हैव टू स्पीक समथिंग अगेंस्ट माई कंट्री, अगेंस्ट माई रूल्स विच आर प्रेजेंट इन माई कंट्री। ना तो मुझे प्रेसिडेंट के बारे में बोलना है, किसी के बारे में नहीं बोलना है। जैसी वो वाली टर्म आती है इनसे रिलेटेड, वो तुरंत ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो अब अपना अलग अलग है, जो भी मॉडल बनाया, जिस कंपनी ने बनाया, जिस कंट्री जैसा भी है, उस हिसाब से वो अपने आउटपुट दे रहा है। ओके, लेकिन ध्यान ये रखा जाए कि वो किसी के खिलाफ ना हो, इट्स नॉट बी अगेंस्ट एनीथिंग। ओके फाइन, तो ये आपका है रिस्पॉन्सिबल एआई। तो एआई एक्सेलरेट कर रहा है काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च, मेडिसिन, क्लाइमेट साइंस, फिजिक्स, स्पेस। आप एआई टूल का कहाँ यूज़ नहीं कर रहे हो, हर जगह तो यूज़ कर रहे हो आप एआई टूल का। ठीक है, इनफैक्ट आप अपनी पढ़ाई के अंदर भी यू डू यूज़ द चैट जीपीटी। आपको कंटेंट क्विक क्रिएट करना है, कर लो फटाफट, हमको अपना टास्क फिनिश करना है तो बस कॉपी पेस्ट करा है ये। ठीक है, बट ऐसा इन बातों का ध्यान रखें कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी खत्म ना हो। ठीक है, आप यूज़ करो, बट योर क्रिएटिविटी शुड नॉट बी एंड। हमें तो क्रिएटिविटी बढ़ानी है, खत्म नहीं करनी। वी नॉट हैव टू एंड अवर क्रिएटिविटी। तो आप टूल का यूज करें फॉर वेरियस पर्पसेस, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, बट यू नॉट हैव टू चीट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ओके फाइन, then sustainable AI है, that means balancing AI growth with environmental responsibility. AI requires high computational power leading to increased carbon emissions. Okay, क्योंकि इनके डेटा सेंटर्स हैं। ओके, और काफ़ी बड़ा डेटा, और आप ये देखें कि यदि कोई भी मॉडल है उस पर कितने क्लाइंट्स हैं जो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कुछ कंटेंट क्रिएट करके देने के लिए, तो कंप्यूटेशनल पावर काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, मैनेज करने के लिए। Okay, so that's what we have to take care of. So AI model training carbon footprint, that means GPT-4 जो है that require massive energy consumption. तो अब GPT-4 जिस मॉडल का यूज करो उसको एनर्जी काफी ज्यादा लगती है, so that will be having some e-waste. Okay, so AI driven hardware leads to rapid obsolescence. So solution could be, यदि हम green energy की बात करें, ओके, जहाँ पर लो कॉस्ट एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन हो। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल डेटा सेंटर्स को यदि सोलार या विंड एनर्जी से चलाया जाए, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन ब्रिंग सस्टेनेबिलिटी इन एआई। हमारे सामने, इंडिया के सामने चैलेंज डेटा सेंटर का ही तो है। हमारे पास चैलेंज डेटा सेंटर का है। ठीक है, अब आप यदि कोई बड़ा, आप कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो, यू आर गोइंग टू बिल्ड अ टूल। ठीक है, पहली बात क्वेश्चन ये उठता है कि डेटा कहाँ से लाओगे इतना सारा, आप कहाँ कहाँ पीछे रह गए।
भाई हम गूगल को चलाते आ रहे हैं, ठीक है भाई, गूगल उसने बना दिया, इसी को यूज करो। हमने कभी कोशिश करी क्या अपने लिए कुछ करें? ये बात अलग है कि गूगल का सीईओ इंडियन है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? वो आपके लिए थोड़ी ना काम करेगा, वो तो जिस कंपनी में रिक्रूट है उसके लिए काम करेगा, आपके लिए थोड़ा ना करेगा। ठीक है भाई, इन्होंने बना दिया, चलाओ। इन्होंने यूट्यूब बनाया, इन्हीं इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है वो, चलो ये यूट्यूब भी चला अपना। कोई कोई है क्या आपका वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कितना पॉपुलर है? कोई है क्या? ठीक है। फिर डेटा सेंटर भी इन्हीं के ही हैं, इन्हीं से यूज करो। जीपीयू भी इन्हीं के पास है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब एनवीडिया का नाम सुना होगा आपने, एनवीडिया। ठीक है। अब वो जो जीपीयू, चिप चिप में भी हम पीछे हैं, चिप टेक्नोलॉजी में चिप। अब चिप इंपोर्ट करो, ठीक है, और उसका डेटा सेंटर बनाओ। उसके बाद फिर आप जो मॉडल बना रहे हो, डेटा लाओ, डेटा से फिर ट्रेनिंग करो। तो ये बहुत, और इसके लिए अपन को होना पड़ेगा। डिपेंड होना, तो हमारी डिपेंडेंसी तो हमें आगे नहीं ले जाने देगी। अब डिपेंडेंट रहो तो कहाँ से आप खुद का एलएलएम बना पाओगे? यूएस बना चुका, चाइना बना, आप कब बनाओगे? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी है ही नहीं, रिसोर्सेस नहीं। अल्टीमेटली हमारे सामने चैलेंजेस रिसोर्सेस के हैं। कहाँ से लाओगे रिसोर्सेस इतने? ठीक है, अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हमने 10,000 जीपीयूज के लिए तो कर लिया है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं 18,000 जीपीयूज तक हम बढ़ा दें। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास 18,000 ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेस जैसे आपका सीपीयू होता है ना मशीन के अंदर, ठीक है, तो सीपीयू सिंपल अभी कैलकुलेशंस कर लेगा। जीपीयू में हमें डीप लर्निंग के अंदर और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए मुझे ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है। ओके, इफ यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू लाइक ये टेक्स्ट एनालिसिस ही हो गया, इमेज एनालिसिस हो गया, वीडियोस एनालिसिस हो गया, वी रिक्वायर द जीपीयूज फॉर दैट। ठीक है, वो ऐसे सिंपल सीपीयू पे नहीं हो पाएंगे, खत्म हो जाएगा। ये तो है ही नहीं, रिसोर्स में कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कहाँ से इतने रिसोर्सेस आपको मैनेज करना है? कॉस्टली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी पीछे हैं। ठीक, ये बातें अभी निकल के आई। ठीक, तो सस्टेनेबल एआई, तो यहाँ पर बोला है सस्टेनेबल एआई, जनरेटिव एआई। वी आर गोइंग टू कवर द एआई इथिक्स, एआई प्रिडिक्शन, एआई मॉनिटरिंग। एआई का यूज केस है कि कहाँ कहाँ पर आप लगा सकते हो, एआई प्लानिंग, एआई एक्सपर्ट सिस्टम, एआई मैनेजमेंट। ओके, दीज आर द यूज केस ऑफ एआई। ओके, फाइन। तो एआई को फिर साइबर सिक्योरिटी में भी यूज कर सकते हैं, हम कर ही रहे हैं इनफैक्ट कई प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट आई हैव मेड सो मेनी प्रोजेक्ट्स, अब कुछ मैं प्रोजेक्ट्स आपको बताऊंगा अभी अभी। ठीक है, सो वी कैन यूज दिस एआई इन साइबर सिक्योरिटी, इन डिटेक्शन ऑफ लाइक थ्रेट्स, फिशिंग अटैक्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ओके जो कि बनाए गए हैं। वेदर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, ओके, और फ्रॉड वहाँ पर भी आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। फाइन, सब हो सकता है। और काफ़ी एडवांसमेंट्स भी हो गया, प्रोजेक्ट बन चुके हैं, वी आर मच मोर इन दैट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया है ए एन साइबर सिक्योरिटी लाइक इन नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योर ऑथेंटिकेशन, प्रिवेंटिंग ऑनलाइन फ्रॉड्स, लाइक फास्टर डिटेक्शन, एआई से आप क्विक कर सकते हो, फिशिंग डिटेक्शन कर सकते हो, बिहेवियर एनालिटिक्स कर सकते हो। यदि कोई अनऑथेंटिक पर्सन कोशिश कर रहा है नेटवर्क के अंदर एंटर करने के लिए, तो आप पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करके, बिहेवियर रिकॉग्नाइजेशन करके यू कैन फिल्टर इट आउट, ये कर सकते हो आप। ठीक है, ऑलराइट, तो काफ़ी अच्छा एक यूज़ केस है यहाँ पर। ओके, ग्लोबल एआई रेस में मैंने आपको क्लियर कर दी बात। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना तो अपनी मिलिट्री में भी एआई का यूज़ कर रहा है, सर्विलियंस में भी कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करने के लिए कर रहा है। यूएस को तो सब जानते ही हैं, पहले कोई बात ही नहीं है इसमें। ओपन एआई उनका, गूगल उनका, माइक्रोसॉफ्ट उनका, सब कुछ तो उन्हीं का ही है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है वो, अच्छा यूरोपियन यूनियन उल्टा चलता है। यूरोपियन यूनियन इथिक्स बनाने में लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस बनाने में लगा हुआ है कि कितना, हाउ मच एआई टूल्स का यूज करना है और कितना नहीं करना है। वो अपने अलग रूल निकालता रहता है, वो मॉडल बना नहीं रहा है। यूरोपियन कंट्रीज वो ये नहीं बना रहे कि हमको एआई में और ये मॉडल, नहीं नहीं, वो उल्टा काम, वो कह रहे हैं कि नहीं, कितना यूज करना है ये बताओ, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे चल रहे हैं। बाकी खास रेस तो इन दोनों के बीच में चल रही है। अब वो इन दोनों के बीच में ही चल रही है, सीधी सी बात है। ठीक है, स्पेस को लेकर देखो तो चाइना यूएस के बीच में से चल रही है, एआई के बीच में इन दोनों के बीच में चल रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी वॉर है। ठीक है, फाइन। तो ये सारी बातें एआई को लेकर, रेस,
एआई रेस की बारे में कहा जाए तो। ठीक। सो हाउ एआई कैन बी प्रोडक्टिविटी। अब आप एआई का यूज कर ही रहे हो, आपको कंटेंट बनाकर दे ही रहा है, तो इट्स प्रोडक्टिव इन नेचर। ओके, एज पर योर एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज में भी। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि इफ यू आर बीन अ सीएससी पर्सन, एक समय था कि हम कोडिंग करके दे दे, कोई दूसरा हमारा कॉम्पिटिटर ही नहीं था, कोई हमारा कॉम्पिटिटर था ही नहीं। दूसरा, हमको सिर्फ ये देखना है, बीइंग एज अ ह्यूमन, तो ह्यूमन ह्यूमन की ही बात थी, कंपटीशन यदि कौन बेटर। लेकिन अब तो एआई भी एक कॉम्पिटिटर आपके सामने आ गया, आप बोलो इससे कौन सा कोड बनवाना है आपको, आप लिख के दे दो, बना के दे देगा वो, कोड बना के दे देगा। अब तो आगे यही होने वाला है, जस्ट गिव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दीजिए, वो उसकी पूरी कोडिंग करके उसको डिप्लॉय भी कर देगा इंटरनेट पे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट तक, फ्रॉम फ्रॉम प्रॉम्प्ट टिल डिप्लॉयमेंट, पूरा कंप्लीट पैकेज, पूरा फुल स्टैक कंप्लीट जो है वो आपको करके दे देगा। होने वाला है अभी आगे, दूर नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपके सामने एआई भी एक चैलेंज है। ठीक है, ड्रॉबैक्स तो हैं इसके, लेकिन अब हम उससे बेटर तब हो पाएंगे जब हम रीजनेबल हों, जब हम रिसर्च कर रहे हों, जब हम एक्सप्लोर कर रहे हों, जब हमारी मैथ्स अच्छी हो। ठीक है, तो हम इसको बीट कर पाएंगे। लेकिन यदि आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो और आप वही की वही लूप बैक वाला काम कर रहे हो, आपने कुछ नई चीजें सोची नहीं करने के लिए, तो आपको ये एआई, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्विकली कर देगा ना। ठीक है, ये तो क्विकली करके दे देगा। तो एनी ऑफ द टास्क विच आर सिमिलर इन नेचर दैट विल बी डन बाय द एआई, नो यू आर नॉट रिक्वायर्ड, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, तो चैलेंज यही है, जॉब डिस्प्लेसमेंट की रिस्क है, ध्यान देना। स्किल गैप, वर्कर्स नीड एआई लिटरेसी। ठीक है, अब एआई तो सीखना ही पड़ेगा आपको, ये तो सीखना ही पड़ेगा एआई, तो आपको प्लस पॉइंट या बेनिफिट मिल सकता है आगे वर्क के लिए। ठीक है, ऑल राइट, फाइन। एंड देन कंक्लूडरी रिमार्क में मेरे पास ये कहना है कि एआई इज शेपिंग इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। ठीक है, आप हर जगह देख लीजिए, मैंने यहाँ पर बोल भी दिया है आपसे, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, वेदर इट इज हेल्थ केयर, वेदर इट इज रिटेल, वेदर इट इज फाइनेंस, वेदर इट इज बैंकिंग सेक्टर, वेदर इट इज एन एजुकेशन, कहीं भी उठा लो आप। ठीक है, एआई का यूज हो रहा है। ओके, रोबोटिक्स, एआई, इंफॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। ठीक है, देर आर सो मेनी रिसेंट डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव वो बनते चले आ रहे हैं। ठीक है, और आगे भी ये कंटिन्यू में रहेगा, तो अब इसी का ही आगे ट्रेंड जो है वो फॉलोअप होगा, आपको सीखना ज़रूरी है। ओके, फाइन। एंड कॉल टू एक्शन में यही है कि एआई ऐसा हो जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एआई एजुकेशन, ऑल्सो रिसोर्सेज टू बिल्ड द एआई टूल्स, ये भी होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट मुझे और जोड़ना चाहिए था कि रिसोर्सेज भी होने चाहिए हमारे पास एआई टूल्स बनाने के लिए, ताकि हम भी ये कह सकें कि कम नहीं है, हमें भी आता है, वी ऑल्सो नो, हम भी मैथ्स में अच्छे हैं, हम भी कोडिंग में अच्छे हैं। ठीक है, हम भी रीजनिंग में अच्छे हैं, और हम भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको लेकर ग्लोबली हमारा टैलेंट रिकॉग्नाइज हो। ठीक है, इंडिया को जाना जाता है कि हाँ आईटी में इनका आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, तो है। ठीक है, यूएस जाकर हमारे काफ़ी बच्चे काम कर रहे हैं, आपके साथ वाले भी, आपको भी अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल जाएगी, लेकिन यूएस जाकर कर रहे हैं, क्यों इंडिया में क्या दिक्कत हो गई, इंडिया में नहीं मिली अपॉर्चुनिटी, बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफ़ी हैं। मैं सिर्फ एआई की यदि बात करूं तो आपने देख लिया, मैंने क्लियर कराया बात को, यूएस और चाइना की जो वॉर है, उनके ही प्रोडक्ट्स हैं, उनके ही टूल्स हैं, वही यूज़ कर रहे हैं। हमारे सामने ये चैलेंज है कि हम कुछ नया लेकर आएँ। मैं इस बीच में आपको कुछ अपने प्रोजेक्ट्स बताना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू टेल अबाउट सम प्रोजेक्ट्स। जैसे कि दिस इज़ अ कोड विच आई हैव डन ऑन एआई एजेंट्स। ओके, so in the AI agent, for example, an agent I have created. Okay, this is an AI agent, and for example, if I am querying to this agent that temperature is rising and the water level is low. Okay, so this agent will take an action. It's going to give me an answer that the best action depends upon the context, like temperature is rising, water level is low, suggests that there is a potential problem possibly related to drought or heat wave. So it will give you a suggestion. ठीक है, ये एक सजेशन देगा कि what can be done here if this is a problem happening.
Okay, I have made so many agents, like financial agent also I have made. Depend upon the profile, financial profile. For example, if this user is having an it's of age 30, income 50,000, risk tolerance is moderate, and if you ask for stock market is currently volatile, so it will suggest something related, whether to invest, whether not to invest, what can be done. Okay, so it will take an action according to your context. Okay, this is about AI agent. Okay, we are also having, let me tell you one more thing. We are also having RAGs, retrieval augmented generation. Okay, what happens in a RAG? For example, you are a user, you do a query. This query don't go directly to the LLM. This query don't go directly to the chat GPT. This query go to knowledge base. Okay, and from knowledge base it fetches a content which is similar to the query. Okay, so now I will be having query plus context. That means some relevant information related to the query. Then this query and context will go to the LLM. Then LLM will frame an answer that will better answer rather if you give query directly to the LLM. Okay, so here we are providing context to the LLM, and then we are getting a refined or better answer. This happens in retrieval augmented generation RAGs. Okay, so we were having this RAG system, then RAGs, after RAG we are having AI agents. Okay, the one which I have explained you, and there are so many further research is happening, and it will come up. You will see many more such kind of techniques ahead. So this is retrieval augmented generation. Okay, fine. I made the codes related to RAGs also. For example, I want to show you one of my project where this is an application which is built with Google Gemini. I've used API key of Google Gemini. If you upload any of the PDF here, for example, if you upload any of the PDF, let us say this PDF I have uploaded. Let me refresh and show you the result. Okay. So if you browse and if you upload any of the PDF here, you can do query related to this PDF. Like, like what is the aim and objectives in this research paper? Okay. You can ask anything related to this PDF. I made this application for research papers. Okay, to upload a research paper, PDF, and then you can query to it. So it's going to answer that the aim of this research is to introduce simple and more efficient method for fine tuning of large language models, etc., etc. It's going to tell you about that. Okay, fine. There are so many applications like with such kind of systems has been built. I have built application. This is one of the use case which I am showing to you right now. Okay. Apart from that, in computer vision, if I do say, I have done a lot of projects like related to object detection. You can see here, this is an object detection in a streaming, in the video streaming, where you can detect a person, you can detect other objects also in images in the videos. Okay, so there are different use cases which has been presented in such kind of projects. Okay, fine. Apart from that, you can see my Kaggle. Okay, I have done the coding on my Kaggle notebook where there are so many other projects related to healthcare. For example, recently I have made a project on lung colon cancer detection. Okay, lung colon cancer detection. So in this particular project I am having the images of lung colon. Okay, like this. Okay, if you want to see. Okay, here is what you can see. So you can refer to many of the projects on healthcare which I have done. They are all available on Kaggle. Okay, so like this, the cancer images are present. Okay, such cell images. Okay, fine, cell images. So in this particular project, I have applied the
deep learning. Okay, I build an algorithm, I build a model. Okay, and I perform the training of that particular model. This is my model. This is the architecture which I have developed. Okay, I have given my images data of lung colon to this particular model. I perform the training, and these are the results which I have achieved. Okay, accuracy increased, losses decreased. So this is how better my model has been working. Okay, so the accuracy which I achieved with the detection of lung colon cancer is 81%. Okay, apart from that, as I already told, there are so many projects you can refer for different, like breast cancer, brain tumor. Okay, you can get so many projects, all are available here. Okay, prostate cancer, fine. There are different kinds of projects which are available. The notebooks are available, and you can include in your curriculum also. You can take my help. Only the thing is, if you have any doubt, you can ping to me related to it. Okay, Vanshika and Anshika, is it okay? And Yes. one thing I want to say: if any of the students who are interested in doing projects and in the research, they can join me. Okay, I'm also looking for the students who want to explore more in this particular field, in this area, and who wants to do the quality projects. Okay, so they can be part of my journey. Okay, and you can connect to me on LinkedIn. Okay, that's a better way. You can connect to me on LinkedIn. Okay, fine. All right. Thank you so much, sir, for such an insightful and informative session. I hope our audience has gained meaningful insights. Now, I invite the participants to ask Yes, any any question, questions please? or share Yes. their doubts. Any questions, any doubts? Yes, sir. Please say. How important is having a strong math background for an AI career, and how can we improve in these areas? Okay, Sangini, very good question. And I have already told in the starting itself कि maths ही सब कुछ है यहाँ पर. Maths ही सब कुछ है. And the topics which I have mentioned, like linear algebra, in the linear algebra you are having vectors and the matrices. Okay, vectors and the matrices. Second comes the statistical analysis, statistics. Okay, you need to talk about the distribution of data. ओके, देन कम्स द प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर आप जो है आउटकम्स की बात करते हो. यू डू टॉक अबाउट द आउटकम्स. ओके, तो आउटकम्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए. देन कम्स द इंफॉर्मेशन थ्योरी, वहाँ पर भी आपको प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है. देन कम्स द कैलकुलस, जहाँ पर डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस का यूज़ होता है. ओके, तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपसे बोले हैं ना, इसमें थरो होना चाहिए, मेजर है ये. ओके, तो आपने कहा कितनी मैथ्स आनी चाहिए? इतनी तो मैथ्स आपको आनी ही चाहिए. ओके, देन ओनली आप कह सकते हो कि आप कुछ यहाँ पर डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए जाओगे, आपको समझ में आएगा कि आर्किटेक्चर में यूज़ क्या करना है और रिजल्ट्स क्या आ रहा है. ठीक है, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क. ठीक है, आप कमेंट कर रहे हैं, दैट्स ओके, बट आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. What skill do you think crucial for something entering into the AI field? AI field में आपको मैथ से स्टार्ट करना है, साथ में पैरेलल आप पाइथन प्रोग्रामिंग पर आप हैंड्स ऑन करें. तो पाइथन और मैथ्स को आप सॉलिड करें. उसके बाद आप जब मशीन लर्निंग पर जाते हैं, तो एक बात है डेटा. ठीक है, उसको भूलना नहीं है. डेटा डेटा का समझ आपको आनी चाहिए. डेटा कितने टाइप का होता है, और डेटा का इंटरप्रिटेशन यदि आपको करना है, तो कितने टाइप से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या विजुअल्स हम उसके ऊपर बना सकते हैं, और उससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. ओके, सो फर्स्ट मैथ्स एंड पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, ये दोनों पैरेलल चलाइए आप. इसके बाद यू कैन गो अहेड विद मशीन लर्निंग. फिर आप मशीन लर्निंग पे आ जाइए, अल्गोरिथम्स पढ़िए. देयर आर मेनी अल्गोरिथम्स लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री. देयर आर मेनी अल्गोरिथम्स देयर. लेकिन एक बात मैं आपको और समझा दूं, एक्सपर्ट के अंडर में यदि आप काम करेंगे कुछ, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको यूज केसेस और जो लाइव डेटा पर वर्क कैसे करना है, वो सीखने को मिलेगा. सो ट्राई टू वर्क अंडर सम गाइडेंस.
आप ऐसा करें, कुछ देखें प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो वहाँ से जल्दी सीखने को मिलता है। ओके, अभी हमारे पास, मैं फिर उस बात को पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यहाँ, उन्हीं को रेफर करो जिनकी मैथ्स अच्छी है। ठीक है, जस्ट रेफर टू दोज पीपल हु आर गुड इन मैथ्स। आप इधर उधर तो कुछ नहीं आने जाने वाला। ठीक है, दोज पीपल हु आर गुड इन मैथ्स, दोज पीपल हु आर गुड इन दिस कोडिंग बैकग्राउंड, और जो आपको कुछ नया निकाल कर देना, और जो रिसर्च की बात करें, जो रिसर्च की बात करें, उन्हीं को रिफर करना। बाकी आपको सिंपल कोई कोई कोड चला के बोल दे कि ये रहा कोड, ये रही मशीन लर्निंग, वो नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो फिर मैं आज यूएस और चाइना का नाम नहीं लेता यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, समझो उस बात को। ओके, यस वंशिका, यू कैन अनम्यूट, आप कुछ कह रहे हैं शायद। There is a defining amount of project that inspired in the journey of AI. I want to ask, yes, I told that जो जिज्ञासा ने पूछा कि आप कुछ प्रोजेक्ट, वॉज देयर अ डिफाइनिंग अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट दैट इंस्पायर्ड योर जर्नी। देखिए, मैं आपको यदि अपने बारे में बताऊं, आई एम ऑल्सो CSE पर्सन। मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही है। मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो आई डिड पाइथन, मैंने पाइथन करा। फिर पाइथन को करने के बाद जब मैंने डेटा को एक्सप्लोर करना शुरू करा, डेटा साइंस के बारे में काफ़ी बातें हो रही थी, तो मैंने डेटा साइंस को एक्सप्लोर करना शुरू करा। ठीक है, मुझे लगा यार अब यहाँ तो मतलब हम पाइथन का यूज़ करके काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, डेटा पे काम कर सकते हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे करके पाइथन का यूज़ करते हुए ही डेटा पर इंसाइट्स बनाना मैंने ड्रॉ करे, कोडिंग करा, और मैं फिर ये देखा कि चलो कोडिंग तो बहुत अच्छी है, डेटा पे आप कुछ कर पा रहे हो, लेकिन अभी भी कमी रह गई है। वो क्या कमी रह गई? मैथ्स की। क्योंकि आप कोड करके जो रिजल्ट्स लेकर आ पा रहे हो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो आप। आपको यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने बनाया है, विजुअल बनाया है, उसका अलाइनमेंट वो लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, क्योंकि यदि स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो देयर इज कर्टोसिस, ओके, देयर इज लाइक स्क्यूनेस इन द डेटा, तो वो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने मैथ्स को फॉलो अप करा, ये समझा कि ये आप अब लीनियर अलजेब्रा में देखा कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, वेक्टर कैसे बन रहे हैं, उन पर क्या ऑपरेशंस होती हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स को और एक्सप्लोर करा मैंने, कितने क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स अपने समय पर, यदि आपको भी मैं बात करूं तो इतना ही समझता था, मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स इतना ही समझता था कि अरे मीन मीडियन मोड होता है बस स्टैटिस्टिक्स तो। लेकिन यदि आप और अंदर जाओगे, स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लोर करोगे, तो इससे भी काफ़ी कुछ ज़्यादा मिलेगा आपको। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मिलेगी आपको इसके अंदर, एंड देयर आर मेनी अदर टॉपिक्स, तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो स्टैटिस्टिक्स हुआ, फिर प्रोबेबिलिटी, मुझे डर लगता था। ठीक है, वो अभी भी, खैर प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जानते ही हो, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा एक्सप्लोर। तो इस तरीके से इंटरेस्ट बना। तो कोडिंग साथ साथ में ये इंटरेस्ट, मैंने टॉपिक्स को एक्सप्लोर करा, रिसर्च पेपर्स पढ़े, देखा कि क्या प्रोजेक्ट में किया जा सकता है, लूप होल्स क्या हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हैं, काफ़ी एफर्ट लगाए, दिन रात पढ़ाई करी इन सब चीज़ों को लेकर, तब जाकर मैं इस लेवल पर आ पाया हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या जर्नी होनी चाहिए। तो एक जिज्ञासा का क्वेश्चन था जिसको अभी आंसर किया। एंड वी, व्हाट वुड यू रिकमेंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एआई बियॉन्ड सर्टिफिकेशन? देखिए अपनी जगह है सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन अपनी जगह है, लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूँ, स्किल्स मैटर करता है, ओनली स्किल्स मैटर्स। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में कि कोई वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जुड़िए, जुड़कर सीखिए तो ज़्यादा ज़रूरी है। आप वीडियो ट्यूटोरियल निपटा दोगे, सर्टिफिकेट ले लोगे, उससे मुझे तो नहीं लगता कि जॉब बन जाएगी, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, आपको एनी हाउ कुछ एक न्यू आइडिया के साथ आना पड़ेगा, दैट विल हेल्प यू। तो ज़रूर आप ऐसा गाइडेंस लीजिए जो आपको बता सके कि रियल वर्ल्ड डेटा, रियल प्रॉब्लम्स पे कैसे काम किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर रहा है नेहा का, कि सिर्फ कोर्स वर्क और सर्टिफिकेशन ले लो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ठीक है, आपको डेटा पर काम करना पड़ेगा। एडवांटेज साइबर सिक्योरिटी के अंदर, यस मुमल, मुमल सिंह, यस आस्क द क्वेश्चन।
Namaskar, sir. So I हाँ have a question. yes बोलो. What upcoming AI trends should I, as a CSE student, should focus on for long-term career growth? ओके, तो एआई ट्रेंड्स में तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जैसा मैंने बोला, जनरेटिव एआई. ठीक है, गवर्नमेंट भी जनरेटिव एआई पर काम कर रही है, गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है. इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो यही कह रहे हैं कि हम भी अपने जनरेटिव एआई टूल बनाएं. आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग कि आफ्टर 10 मंथ्स हम अपना एलएलएम ले लेंगे. तो मुझे तो खैर अभी डाउट लग रहा है. वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू हैव दैट आफ्टर दिस मच टाइम. ओके, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो आप यदि कह रहे हो कि फोकस किस पे करना है, फोकस जनरेटिव एआई टूल्स, एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मल्टी मॉडल, मैंने आपको रैग बताया, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, एआई एजेंट्स, ये अभी ट्रेंड में चल रहा है. ठीक है, तो ऑटोमेशन पर ये चीज़ें लेकर जा रही हैं. आप इसी को ज़रा और एक्सप्लोर करें, आपको यही आंसर रहेगा एट द मोमेंट. ठीक है, ऑल राइट. तो जनरेटिव एआई इज द ट्रेंड, इस पर फोकस करिए. यस अस्मिता. Sir, but other programming languages we can हाँ focus on as a beginner. हाँ ठीक है. तो आप देखिए, पाइथन तो काफ़ी सिंपल है. पाइथन, जैसा मैं बोलूँ, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, बाकी आप C++, जावा करते हैं, करिए. वेब डेवलपमेंट में आपका अच्छा है, आपको इंटरेस्ट है, यू प्रोसीड फॉर द वेब डेवलपमेंट ऑल्सो, करिए आप, कोई इशू नहीं है. ठीक है. एंड बट द पॉइंट इज कि आप यदि एआई के लिए जाना चाहते हैं तो पाइथन पर आप कमांड बनाइए. ठीक है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करिए, जितना सीख सकते हो सीखो. ठीक है, जितना सीख सकते हो सीखो, करिए, लेकिन पाइथन एआई के लिए बेटर है, बेस्ट है. ओके. Okay, sir. ठीक है. तो ओके, धृति, यू हैव एनी क्वेश्चन? एडवांटेजेस ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी. स्तुति, साइबर साइबर क्राइम तो अभी हम देखें तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतने लेवल पर बढ़ गया है साइबर क्राइम कि आप फेक कॉल्स आ जाएंगे, आपसे आपका ओटीपी मांग लेंगे, दे दो. यदि हम बात करें अपने पेरेंट्स की, तो उनको शायद इतना नहीं, कंप्यूटर, इतना सिस्टम्स पर वर्क उनको नहीं है पता. तो फूल बनाया जा सकता है. ठीक है, तो एआई सिस्टम कैन हेल्प यू कि ये जो साइबर क्राइम हो रहे हैं इनको फिल्टर आउट कर सके. यहाँ पर साइबर क्राइम से रिलेटेड डेटा है, हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, यदि कोई फेक कॉल आ रहा है वो अलग ही सेपरेट कर देता है, उसको मार्क कर देता है कि ये फेक है. हमको कई बार इन्फॉर्म भी किया जाता है कि आप शेयर ना करें अपना पासवर्ड, इतना ओ टी पी पिन वगैरह. ओके, तो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ मेजर कंसर्न. तो एआई काफ़ी हेल्प करेगा यदि आप इसको ऑटोमेट कर लें तो. ठीक है, तो एआई कैन मेक अ मॉडल, इट डू बिल्ड अ मॉडल विच कैन ऑटोमेट द टास्क. ठीक है, तो ये ज़रूरी है. ठीक है. Yes, Dhriti, do you have any question? Yes, sir. So, actually, my question is based on the projects. Like you Hmm. mentioned earlier, that you Hmm. made projects and Hmm. uploaded or like showcased it on Kaggle and Hmm. all that platforms. Hmm. So my question is that I myself made a few projects, but Okay, I good. don't know that if those projects are actually working. Hmm. And will those be if I chose 2 to 3 real life problems and then I made projects on them. So Hmm. two things are that first, where can I showcase my projects, and Hmm. second, how should I get to know that the coding or the project I made is correct or not? Okay, so first you have recognized problem statement, and according to the problem statement, you have to make your aim and the objective, and what is your proposed result, what is your desired result. If you are So getting your I did. desired result, then it's okay. If your result which you are expected is not correct, okay, in your ML, in your AI, you do have model evaluation criteria, if you know Yes, about sir. this thing. Yes, sir. So I studied हाँ. AIA for 4 years, Okay. so I Hmm. have a bit Hmm. information. Yeah, ask Dhriti then. What's the issue? This was only the issue. Like after the required result, like this was the aim I have Hmm. to make. Hmm. Hmm. I Hmm. still had the doubt that I can do something more also, Hmm. but Hmm. I'm still Yes. not getting on that point that what more can I do? What more you can do? The thing is, what more? Yes. First you have to explore what has been done on that particular problem statement. For example, if I show you
again na, that's depend upon your research. Okay, the question is what more you can do is how more you have researched. For example, let me show you a folder in which I have collected. I need to do a workshop. I need to do a workshop. Okay, and in that particular workshop, first I do collect the research papers. Okay, I have collected the research papers based upon it. So like medical imaging. Okay, okay. So if I can show you the research paper. Okay, I need to search it more. So first you have to collect the research paper, and then you have to identify that how much work has been done. For example, let me open this folder. Okay, let me open this folder, or hate speech. Okay, let me open this. Okay, or okay, let me open this. So you have to first explore the research papers. Okay, your topic is right now, let's say cyber security, fraud detection. So Hmm. how much work has been done? How much work has been done in fraud detection till 2024? Any new algorithm came? Is there any new algorithm related to the fraud detection? If it's a Hmm. new algorithm, you haven't incorporated that algorithm in your project. Okay, Hmm. so come read first that what the authors did, what the people did. For example, this is one of the research paper. Okay, this is one of the research paper where so many things has been mentioned. Okay, similarly you will be getting on a problem statement so many other research papers. Recent, try to identify recent research papers. Okay, again one more thing I want to tell you. One more thing I want to tell you that, okay, kindly work under some guidance, some professor. They might be working on some topics. Okay, so just take help from them. Kindly ask them on what topic you are working. They will tell, and they will guide you in a way. Kindly identify new recent works, what has been done. Mark the algorithms used. Okay, mark the algorithms used. You haven't used in your work, you check the algorithm used by those people. Try to incorporate those algorithms in your project, see what the results are coming. Still if you are facing some difficulty, change the algorithm, read another research paper what they have used, try to incorporate. तो आपने जितना कर लिया उतना हो गया, दैट्स डन. Hmm. नया दूसरे लोगों ने तो करा होगा ना, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. ठीक है, और वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आर्टिकल निकालिए, रिसर्च पेपर निकालिए और देखिए कि उन्होंने क्या काम करा. यूज करिए आप उस चीज को. Okay, sir. ऑलराइट, ये चीज है. Okay, thank you so much, और sir. मैं तो कह चुका हूँ कि इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन इंटरेस्टेड, सो दे कैन कम अप एंड दे कैन जॉइन मी. ओके, वर्क करने के लिए. ठीक है, सो लाइक let me share you my LinkedIn. So that's the best way for you guys to connect to me. Okay, fine. So like आप मुझे मेरे नाम से भी सर्च कर लोगे, so you will get me over the LinkedIn. All right, fine. So let me show my profile. Okay, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ. एंड आपको मेरे प्रोजेक्ट्स और जो भी मैं वर्क करता हूँ रिलेटेड टू रिसर्च आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. यू विल गेट एवरीथिंग हियर. ठीक है, यू कैन फाइंड मी विद माय नेम ऑन द लिंक्डइन. एंड यदि किसी भी स्टूडेंट का लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं, ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम, वो चलो ठीक है तो ठीक है, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है. लिंक्डइन पर प्रोफाइल तो बना ही लो, ये तो मैंडेटरी है. ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट्स पर आपको नया जो वर्क जो प्रोफेशनल्स कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. ओके, फाइन. तो ये मेरे प्रोफाइल पर आप देख पाएंगे. देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स आई डू शेयर. मैं बता भी देता हूँ आपको. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो रिसेंट मैंने आपको बोला अभी, दैट इज लंग कोलन कैंसर क्लासिफिकेशन. देर आर सम कम्युनिटीज जहाँ पर आप अपना वर्क पुश कर सकते हो, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा. जैसे मशीन लर्निंग कम्युनिटी है, आपको यहाँ पर से अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा. देर आर सो मेनी पीपल आर जॉइन दिस कंपनी. वो देखेंगे कि आप क्या प्रोजेक्ट करते हो, आपको प्लस पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा. ठीक है, तो आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें, जो बड़े ग्रुप्स हों, अपना कुछ काम करें, उसको पोस्ट करें. ठीक है, पुश करें. बाकी मैं हेल्प कर दूंगा आपको यदि
आप वर्क कर रहे हैं तो ठीक है। तो देर आर सो मैनी प्रोजेक्ट्स मैं जिनको पुशअप करता हूँ। यही देखकर अंशिका कनेक्ट हुई, उसने बोला, पूछा, बात करा, इसलिए मैं आपके सामने हूँ और आज ये जो सेशन हुआ है उसी के पर्सपेक्टिव हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। यस, और कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो बताइए। यस, एनी मोर डाउट?